Yes, sir. Good evening, students. Am I audible? Yes, sir. Sorry for inconvenience of 15 minutes. Uh, Yesterday we were talking about the GST features, and I think we had discussed about excise duty, sorry, custom duty that we had seen. Then we had seen the difference between direct taxation, how the tax is going to be paid, how the tax is going to be paid by the end user, that had seen in the last lecture. Okay, now then we had seen what are the what are the types of taxes which comes under before entry of GST, which were the taxes comes under, which were the taxes comes under central government authority, and which are the taxes which comes under state government authority, that we had seen in the previous lecture. Okay, after that we had seen about the custom. So custom is, it is different than it is different than your GST. So custom duty is not part of your GST. Whenever you are going to purchase, or whenever you are going to import goods and services from outside country, that time you need to pay that custom duty. Then rate of custom duty varies product by product. ये rate कभी fix होता नहीं है. Getting it? Next is that it is collection of excise duty, custom duty. It is the duty of custom officer, and custom officer will be available at various destinations from which our country is going to import the material. For example, in case of, if the transportation is via marine, at that time there will be ports where the custom officer will be there. He will observe, he will just check the material, and accordingly he will charge the custom duty. Then the custom officer will be again at airport. Then frontier station means the test, this is the destination from which material is imported within the country. So that is something about custom duty. So custom duty's rate is different, and it is not part of GST. So rate of custom duty is depends upon the value of that goods and services. Again, whether it is dutiable, whether the duty is applicable or not to that product, that custom officer will verify. And accordingly, if the custom duty is applicable to that good, that particular goods, then custom officer will ask you to make the payment. If you are carrying such kind of goods on which, as per our tax rules, if the that particular good is tax for that particular good is nil, that time without paying custom duty you can bring that product into our India. Okay, so this was something about custom duty. So this is one type of tax that will be charged at the time of import of goods within a country. Okay, again, to uh, to overcome or to stop the competition between foreign product and Indian product, here we will charge an extra custom duty. For example, if you are borrowing, if you are importing some electronic goods and services from the China, due to borrowing of these electronic goods and services from China, our Indian business funds are facing the challenges because there is no demand to their products of Indian businesses. At that time, to protect our Indian businesses, our government can charge extra custom duty on the products which we are importing from the China. So उससे क्या हो जाएगा, automatically the person who are importing goods from the China, he or she has to pay extra tax. So automatically what is going to happen, the price, final price of that product in India increases, and as compared to our Indian goods and foreign product, foreign good and Indian good, we will customer will compare these two products, and accordingly customer will prefer the Indian product, the
price of Indian towards lower side, and by charging the extra duty, what our government has done, we have charged a huge duty on the imported products, due to which the price of that imported product is higher than price of Indian product. So by this way, we can protect Indian businessman or Indian manufacturing agency. Okay, so is so कस्टम ड्यूटी हम लोग क्या सीख रहे थे कस्टम ड्यूटी इज द ड्यूटी विच इज आल्सो पार्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज नॉट बाय कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट authority is central government and this government authority is available at various destination where the import of material is possible वहां पे उनका डिपार्टमेंट होता है as per the rate as per amount specified by the central excise office sorry custom officer that person has to pay the tax there and without payment of custom duty I can't bring this product into my country. If I try to bring this product into my country without paying the custom duty by hiding the product somewhere else, and if it is noticed by the custom officer, at that time you will be liable to pay my extra fine on. So you can't do this. So that is something about custom duty that we had seen in the last lecture. Then I think we had discussed about the value added tax. So what we are discussing, before entry of GST, there were multiple of taxes. Okay, तो कौन से टैक्स थे? कैन एनीबडी टेल मी कौन से टैक्सेस थे जीएसटी के पहले? फाइनेंस बैकग्राउंड must know what are the taxes, what were the taxes before entry of GST. कौन से टैक्सेस थे? कैन एनीबडी टेल मी कौन से टैक्सेस थे बिफोर एंट्री ऑफ जीएसटी? यस स्टूडेंट्स, which taxes were there before entry of GST? My question is, which taxes there before entry of GST? तो हम लोगों ने देखा है excise that I think we had. Okay, after that value added tax was there, then we had tax was there, LBT was there, so many taxes. Okay, VAT was the one of the tax which was available before entry of GST. So before 2017, VAT was there. VAT means what? It is value added tax. Means whatever what it is, again indirect tax which was levied on goods and services. So if in India, if any businessman is selling the goods and services within a country, within a state, if I'm selling my product within a country, that time I would have to pay value added tax on the goods, as well as if I'm selling the services within a state, यानी पुणे का प्रोडक्ट पुणे में ही हम लोग बेच रहे, तो we have to pay the value added tax. Okay, and who was the controlling authority for value added tax? So value added tax was collected by state government. Our Indian constitution has given the right to collect the value added tax to the state government. So rate of VAT was different for each and every state. For example, in case of Maharashtra, we were supposed to charge the value added tax at rupees 12%. If you look towards the Gujarat, so Gujarat government was charging the tax of, for example, 11%. If you see towards the Karnataka, the rate of value added tax was different. Getting this? So, because central government had given the authority to decide the rate of value added tax to the states. So, due to this authority, every state was deciding the rate of value added tax. Getting this? So, this VAT was introduced in the
1st April 2005, and it is the tax on value addition. Value addition means what was there? So whatever value I am creating into that product and whatever profit I'm going to generate through this product, on the basis of this, we were supposed to pay the value added tax. This tax was on goods as well as services. And this tax was up to year 2020, 2017. So once we entered, we have demolished this all kind of multiple taxes, and we just announced the GST. GST and goods and services taxes. This is the only one tax for one nation. Getting this? The objective of this GST, objective of implementation of this GST is we should pay only one tax for one nation. Getting this? So before entry of GST, multiple taxes were there. For example, my GST was, for example, excise duty was there, then sales tax was there, VAT was there, then service tax was there. So due to which what was happening, one businessman has to register for VAT, central sales tax और सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। ये बहुत से टैक्सेस को हम लोगों को क्या करना पड़ता था, वी हैव टू रजिस्टर एंड वी हैव टू डू द सो मेनी फॉर्मेलिटीज। तो हम लोगों ने जीएसटी लाने के बाद क्या किया, तो वॉट एवर वर द फॉर्मेलिटीज, वॉट एवर अर्लियर टैक्सेस वी हैव डिमोलिश्ड। हम लोगों ने सारे जो जितने भी टैक्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, सब हम लोगों ने क्या किया, डिमोलिश करके एक नया टैक्स बनाया, नया टैक्स स्ट्रक्चर बनाया, that is called as a GST. Okay, so value added tax is already included into GST, and this value added tax which was already there, it was demolished, and we have this same tax we have included into the goods and services tax. Okay, तो यहाँ पे क्या होता था, VAT was charged on towards the consumer. Whenever any consumer want to purchase any product, at that time the amount of tax was added into basic price of that product. अगर कोई भी मैं मोबाइल लेने जाता हूँ, कंप्यूटर लेने जाता हूँ, तो क्या होता था, मेरा कंप्यूटर का बेसिक वैल्यू प्लस उसके ऊपर लगाया हुआ बेसिक वैल्यू के ऊपर लगाया हुआ 12% टैक्स, it was added into my bill or it was added into my invoice, and accordingly as a consumer, as a customer, I had to pay the tax. This was there. Okay, तो जीएसटी आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको रिप्लेस किया। जीएसटी ने वैट को, सर्विस टैक्स को, सेंट्रल सेल्स टैक्स को, स्टेट सेल्स वैट को और हमारा एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया है। Getting this? So GST is the combination of so many multiple taxes. Getting this? So this is something about VAT. So I think in the last lecture we had seen this is the buying of, so there is the manufacturer, wholesaler, retailer and final consumer. So during these 4-5 stages, here few businessmen has to register for VAT as well as excise duty. यहाँ पे देखिए एक है manufacturer. Manufacturer means what? He is going to purchase raw material from supplier and he will prepare the final product and he will sell this product to the customer. Sorry, he will sell this product to the wholesaler. So if manufacturer is manufacturing the some goods, at that time he has supposed to pay excise duty. समझ में आ रहा है? अगर हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चर करते थे तो मुझे before paying of excise duty, I can't remove my material out of my factory gate. That this was the rule. Okay, before removal of your goods outside your factory gate, you are supposed to pay excise duty. Getting this? So being a manufacturer, first I had to register for excise duty. जितना भी एक महीने में मैन्युफैक्चरिंग करूंगा उसका पहले मैं एक्साइज ड्यूटी पे करूंगा, then and then I can sell this product into the market. This was the condition. So being a manufacturer, मुझे एक्साइज ड्यूटी के लिए भी क्या करना पड़ा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। उसके बाद when I try to sell this product to the wholesaler, at that time I am selling this product to the
wholesaler, that time VAT was also applicable to me. तो मुझे एक बार एक्साइज ड्यूटी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा. अभी मुझे वैट भरना है, वैल्यू एडेड टैक्स भरना है, या मुझे सेंट्रल सेल्स टैक्स भरना है. अगर मेरा ये प्रोडक्ट विद इन स्टेट में होता तो आई हैव टू रजिस्टर फॉर वैट. गेटिंग दिस. अगर एज अ multinational company, if I'm selling this my product into China or Germany or Japan, at that time I have to register for central sales tax. समझ में आ रहा है? तो एज अ मैन्युफैक्चरर मेरा कुछ डोमेस्टिक कस्टमर है और इंटरनेशनल कस्टमर भी. तो इन दैट केस व्हाट हैपन, पहले मुझे एक्साइज ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ा. उसके बाद मेरे कुछ कस्टमर विद इन स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, इसलिए मुझे वैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ा. मेरे कुछ कस्टमर फॉर एग्जांपल जर्मनी के हैं, उसको भी मुझे माल भेजना है, इसका मतलब मुझे सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा. मींस एज अ बिजनेसमैन आई हैव टू रजिस्टर फॉर 3 taxes. Getting this. And I have to make the compliance every month, for every month, every year I have to make the compliance of at a time 3 taxes. Getting this. So that increase the complications of the business. तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना है या मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने के ऊपर ध्यान देना. सो आई वाज यूजिंग माय टाइम फॉर डूइंग दिस सो मच फॉर्मली बिकॉज मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेस वेर देयर. Due to having multiple number of taxes, as a businessman I need to do the formalities. ठीक है. तो वैट में क्या था, एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू रजिस्टर फॉर वेरियस tax authorities. Towards we have to take the license, we have to take the permission, we have to register towards various tax authorities. तो इससे क्या हो रहा था, cost of production, cost of that product was increased. Getting this. As well as there was a scope, to hide the tax. There was the scope to miss the tax. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वी जस्ट रिप्लेस दिस वैट. ओके. अभी एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ हम लोगों ने वी हैव स्टडीड फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स इज कस्टम ड्यूटी, देन हम लोगों ने देखा वैट, एंड नाउ थर्ड इज द एक्साइज ड्यूटी. ओके. अभी एक्साइज ड्यूटी क्या है, मैंने अभी बताया था कि अगर हम लोग कुछ सर्विसेज बेचते हैं तो मुझे सर्विस टैक्स पेमेंट करना पड़ता था. बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर ईयर 2017, जब जीएसटी लॉन्च नहीं हुआ उसके पहले पीरियड में अभी हम लोग हैं. तो अगर हम लोग मान लो, अगर हम लोग इमेजिन वी आर इन ईयर 2014, नाउ वी आर नॉट इन ईयर 2020, हम 2022 नहीं है, हम लोग ईयर 2015 में है या 2014 में है, ऐसा जस्ट इमेजिन करो. अभी एट दैट टाइम वी हैड excise duty, we had service tax, we had central sales tax, we had custom duties, we had corporation tax, we had WOCTRA as well. So excise duty is also one of the indirect tax. It was also indirect tax. और ये किसके ऊपर लगता था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर. If we are selling the services, at that time you have to pay service tax. Getting this? If you are selling the manufacturing goods, at that time you have to pay central excise. You have to pay central excise. And this central excise goes to the central government and VAT was going towards the state government. Okay. Excise duty क्या है? It is the duty or tax charge on goods produced within the country. अगर हम हमारे कंट्री में कुछ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इट इज द ड्यूटी व्हिच इज चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चर. जितना भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके ऊपर मुझे क्या करना है, आई हैव टू पे मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी. सो विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी आई कांट सेल माय प्रोडक्ट और आई कांट रिमूव माय प्रोडक्ट, आई कांट मूव माय प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री गेट. फर्स्ट, at the time of moving, at the time of selling my product to the customers, I'm talking about product, not on services. I'm talking about product. क्योंकि excise duty is the duty which is charged on manufacturing activity, not on service. Okay. तो जब तक मैं excise duty नहीं भरता है गवर्नमेंट को, तब तक it is not allowed to sell this product into the
market. So as an excise officer, as an excise representative of your business, I must have to take care that whatever goods I am selling outside of my factory gate, that tax of those goods has been already paid. अगर वो पे नहीं किया रहेगा तो you can't remove or you can't move this material outside of your factory. तो इसको बोलते हैं excise duty. Okay, it is the tax on production as well as sale of goods. जो प्रोडक्शन और सेल जो हम लोग करेंगे उसके गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाला टैक्स है, एंड दिस टैक्स इज आल्सो नोन एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो एक्साइज ड्यूटी है, अनदर नेम ऑफ दिस एक्साइज ड्यूटी इज द सेनवैट, CENVAT, that is central value added tax. Because why there is the central word? Because authority to collect this tax is central government. Okay, एंड वैट जो स्टेट गवर्नमेंट जो करता है उसको स्टेट वैट बोलते हैं. सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ईयर 2015. देन एज लाइक एक्साइज ड्यूटी, इट इज एज लाइक एक्साइज ड्यूटी, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने किसको, हम लोगों ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी यानी इफ वी आर सेलिंग, if we are bringing products within a country, that time we have to pay the custom. यहाँ पे क्या है, when you are manufacturing the goods and services, at that time this duty is charged on the manufacturer. Okay, then excise duty was levied on the manufacturing goods and levied at the time of removal of goods. यानी रिमूवल यानी हम लोग फैक्ट्री के बाहर जब मटेरियल निकालेंगे उसके पहले मेरा एक्साइज ड्यूटी जाना चाहिए. while GST is levied on the supply of goods, जब हम लोग सप्लाई करेंगे तभी टैक्स लगने वाला. और ये एक्साइज कब का था, पहले लगता था. एक्साइज ड्यूटी मीन्स व्हाट, जस्ट इमेजिन, विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, अगर मुझे मान लो 1000 यूनिट मेरे फैक्ट्री के बाहर निकालना है, तो 1000 यूनिट जो मेरे स्टोर में है उसका मुझे पहले क्या करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को भरना पड़ता था. एंड वंस इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, then I can send this product towards the customer. ये पहला प्रोसेस था एक्साइज ड्यूटी का. यानी जितना भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करोगे, वेदर यू आर सेलिंग और नॉट, इट डजंट मैटर, मैन्युफैक्चरिंग किया ना, आपको टैक्स पेमेंट कर. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो एक्साइज ड्यूटी वाज द टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ऑन सेल. कुछ भी मैंने बनाया, वेदर आई एम नॉट सेलिंग इट, बट यू हैव टू पे द टैक्स बिकॉज यू आर मैन्युफैक्चरिंग. गेटिंग दिस? सो दैट वाज द एक्साइज ड्यूटी. और अभी जीएसटी में क्या बोला है, at the time of sale you have to pay the tax. Excise में क्या था, at the time of manufacturing, once you have manufactured that goods you have to pay the tax. But GST ने क्या बोला है, नहीं ऐसा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है. when you sell the product, at that time just you have to pay the tax, just recover the tax from the respective agencies. ठीक है? तो GST is the destination oriented. GST क्या है, destination oriented, because it is charged on the supply of goods. Okay, now अभी देखिए, today excise duty applies only for the petroleum and liquor. तो GST आने के बाद क्या किया, जो excise duty 2015 में था वो क्या किया, हम लोगों ने GST में रिप्लेस किया. But there are certain products which are again not in the control of GST. GST के बाहर किसको किसको हम लोगों ने रखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर, यानी वाइन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो अभी भी GST के कवरेज में नहीं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट an idea about custom duty, VAT and excise duty? Do you have any doubt? You can please ask me. Otherwise, we will go towards the GST. If you have any doubt, you can ask. If you don't have doubt, just reply me. We will go ahead. Have you got the understanding of custom duty, VAT and excise duty? Yes or no? Tell me first. Yes, sir. Okay. Now, this VAT, excise duty and custom duty, these are the types of indirect taxation.
ये सारे जो टैक्स टाइप्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज these taxes are indirectly collected from consumer or from customer. Who is paying tax? Customer is paying tax. Getting this? So now अभी देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या फर्क है। देखिए डायरेक्ट टैक्सेशन में if my eligibly if I am earning some income and my income is above some certain limit, then I have to pay the tax. ठीक है। अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे पार्ले बिस्किट लेना है, आई एम वेरी रिच पर्सन, ओके। अगर मैं पार्ले बिस्किट लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे पार्ले के ऊपर कितना टैक्स पेमेंट करना है? जितना भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रहेगा। फॉर एग्जांपल 4 रुपए 3.5 रुपए का पार्ले का बिस्किट है, पैक है, और उसमें 50 पैसे मेरा कितना गया? वो जीएसटी गया या वैट गया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरे लिए कितना हो गया? टोटल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट कितना है? 4 ही रुपीस। गेटिंग दिस? अगर फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी पार्ले बिस्किट लेने के लिए गए और जितने कॉस्ट में, जितने प्राइस को मुझे पार्ले बिस्किट एक रिटेलर ने दिया है, उतने ही प्राइस में उसको भी मिलेगा ना। गेटिंग दिस? गेटिंग दिस मीन्स व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट चेंजिंग एज पर द इनकम ऑफ द पर्सन। मुकेश अंबानी बहुत रिच है, इसका मतलब पार्ले के ऊपर उसने डबल टैक्स देना है, और मैं थोड़ा गरीब हूँ उसके एज कम्पेयर टू, तो मुझे थोड़ा कम चार्ज लगने वाला है टैक्स का, ऐसा कुछ नहीं। या कोई भिखारी गया, भीख मांग के कुछ पैसे उसके पास 5 रुपए मिल गए और वो शॉप में गया, तो उसको क्या विदाउट विदाउट टैक्स उसको पार्ले बिस्किट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गेटिंग दिस? बिकॉज दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज एप्लीकेबल, the rate of tax is applicable for all the people, all the category of people. लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? We have done the category of income. Central government had done the category of income and accordingly tax was charged. यहाँ पे क्या है? ये ऐसा नहीं। Getting? मेरा कंज्यूमर कौन है? Accordingly by income capacity of consumer, this tax is not going to vary. Okay, so this is the basic major difference between direct taxation and indirect taxation. अभी tax and tax on tax, the cascading effect. Just read this slide, I will explain. तो जीएसटी हम लोगों ने लाया क्यों और वैट हम लोगों ने क्यों लाया था? Because there was the cascading effect before entry of VAT and before entry of GST. अभी देखिए ये just go through this example, then I will explain. Cascading effect क्या होता है मैं आपको explain करूंगा. First of all, just try to understand. Just try to read out. Okay. Now see here. What is the cascading effect? Cascading effect यानी क्या था कि just look at this example first. This is my cursor is here. Here for example, price of my good was ₹100. तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है 10%. तो 10% ऑफ 100 कितना हो गया? 110. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन डिस्ट्रीब्यूटर. Okay, so distributors original cost of product was 100, on which distributor was supposed to pay tax of 10% to the government. So distributor added this 10% tax and the total final value of that product is 110. Now this product goes to the wholesaler and wholesaler purchase the same product at middle at rupees 110. तो distributor ने क्या किया? 100 रुपीज उसकी कॉस्ट थी, 10% टैक्स चढ़ाया, तो उसकी फाइनल वैल्यू होगी 110. तो होलसेलर जो है वो क्या करेगा? होलसेलर विल परचेज द
the same product at rupees 110 from distributor, और वो उसके ऊपर उसका प्रॉफिट ऐड करेगा, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर कितना टैक्स, होलसेलर हैज टू पे अगेन 10% टैक्स ऑन द इनकम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 110 का 10% कितना हो गया, 121। लेकिन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, 100 रुपीज, लेकिन यहाँ पे कितना लगाया, 110 के ऊपर मैंने 10% कैलकुलेट किया। इसका मतलब जो टैक्स होल डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया हुआ 10 रुपया, उसके ऊपर भी सेकंड स्टेज में टैक्स लग गया, इसलिए यहाँ पे 1 रुपया बढ़ गया। Getting this means what, here distributor is also paying the tax, again wholesaler is also paying the tax on tax which is already paid by the distributor। जो डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट किया था टैक्स का, वो टैक्स का 10 रुपया यहाँ पे सेकेंड स्टेज में 10 रुपया बेसिक वैल्यू में ऐड हो के आया। तो मुझे 10% किसका निकालना चाहिए था, 100 का ही निकालना चाहिए था, लेकिन कितने का निकाला, 110 का। तो ऊपर के 10 रुपए जो है ना, वो मेरे टैक्स की वैल्यू थी, वो टैक्स के वैल्यू के ऊपर फिर एक बार मैंने 10% टैक्स लगाया, इसने मेरी सेकंड स्टेज में वैल्यू हो गई 121। अभी ये होलसेलर क्या करेगा, द सेम प्रोडक्ट विल बी ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द कंज्यूमर और रिटेलर। ओके, customer, that is the retailer, so retailer will purchase the product at rupees 121, और उसका फिर he will calculate 10%, he will calculate 10% of this 121, and it will be added into the final product of, and the total value towards the retailer will be 130। okay, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना टैक्स पेमेंट किया है, सॉरी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 रुपीज का टैक्स पेमेंट किया, देन होलसेलर ने रिटेलर होलसेलर ने कितना किया, 21 रुपीज का टैक्स पेमेंट किया है, और रिटेलर ने कितना किया, 33 रुपीज। गेटिंग दिस, इसका मतलब टैक्स की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, बिकॉज यू आर चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स। अगेन जो टैक्स भी पर आए उसके ऊपर भी हम लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। Cascading effect is nothing but the duty which is already paid towards the government, it should be ignored, or it should be considered for the credit. It should be considered for the credit, and it was not happening. That's why we implemented this. Do you have any doubt? Do you need more info, explanation, or are you comfortable with cascading effect? Tell me, because there will be one question on cascading effect. Yes. Tell me, student, first. No issue, sir. Comfortable? Yes, sir. हाँ, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या होता था, जो प्रोडक्ट का वैल्यू 120 रुपए होना चाहिए था, उसका 133 रुपीज हो गया। इसका मतलब हु इज सफरिंग, कंज्यूमर इज सफरिंग, कस्टमर इज सफरिंग, एंड यू आर पेइंग 3 टाइम टैक्स टू द गवर्नमेंट। यू आर पेइंग 3 times tax, means what, one tax is paid by distributor, one tax is paid by your wholesaler, and one tax is paid by your customer, sorry, retailer। तो इसको बोलते हैं कस्टमर, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी लाया। ओके, अभी देखिए ट्रांजैक्शंस अंडर वैट। तो हम लोगों ने वैट जब डाला तो हम लोगों ने क्या किया, वैट जब इंप्लीमेंट किया तो वी रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट फ्रॉम द वैट। ओके, फ्रॉम दिस टैग। जस्ट रीड दिस स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन यू। हियर से वी हैव a raw material supplier who is supplying raw material to manufacturer, whose selling price, manufacturer जो raw material परचेज करेगा सप्लायर से, उसकी सेलिंग प्राइस है 6000 रुपीज। ओके, उसके बाद 6000 रुपीज के ऊपर वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल 5% टैक्स चार्ज करेगा मैन्युफैक्चरर। तो 5% ऑफ 6000 इज इक्वल टू 300। ओके, so how much tax manufacturer is paying, rupees
300. So 6,000 is the basic value. Just look towards 6,000 is the basic value plus tax is 300 rupees. So total amount paid by the manufacturer is 6,300. अभी 6,300 का प्रोडक्ट लेके मैन्युफैक्चरर लेके उसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद द सेम प्रोडक्ट दिस मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग दिस टुवर्ड्स द होलसेलर एट ₹10,000. 6,300 का प्रोडक्ट अभी 10,000 हो गया बिकॉज ही हैज डन सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द प्रोडक्ट. अभी देखिए, सो दिस इज ₹10,000 इज द बेसिक सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. Again, he is going to pay 5% tax on this 10,000. For example, 10,000 का 5% आ गया 500. Okay. So tax paid और tax paid by the wholesaler is equal to कितना हो गया 10,000 plus 500 is equal to 10,500. लेकिन 10,500 में जो ये जो 500 जो था, तो 500 में से 300 टैक्स ऑलरेडी पहले मेरे सप्लायर ने भरा हुआ है. तो क्या हो जाएगा, इन मुझे एज अ मैन्युफैक्चरर सॉरी एज अ रिटेलर मुझे क्या करना है, कितना टैक्स पेमेंट करना है. मैन्युफैक्चरर ने 300 पेमेंट किया है. जो मैन्युफैक्चरर ने 300 रुपए का जो टैक्स पेमेंट किया है उसका मुझे यहाँ पे इनपुट क्रेडिट मिलेगा. ओके, तो इनपुट मेरा टैक्स लायबिलिटी था 500 बिकॉज 10% 5% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 500. 500 में से 300 रुपए जो मेरे प्रीवियस मैन्युफैक्चरर ने भरे रहेंगे उसका मुझे इनपुट क्रेडिट मिलेगा. तो 500 minus 300 my total tax liability resultant tax liability is only 200. मैं मेरे होलसेलर को मेरा प्रोडक्ट 10,500 को बेचूंगा और गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते समय मुझे क्या करना है, मेरे ऊपर टैक्स कितना दिखेगा 500 का. 500 में से आई विल बी एलिजिबल टू गेट द क्रेडिट ऑफ 300 रुपीज. सो माय एक्चुअल टैक्स पेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट विल बी ₹200. तो इसको बोलते हैं क्रेडिट और इनपुट क्रेडिट और सेनेट क्रेडिट. ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कितना पेमेंट किया था, मैन्युफैक्चरर ने 300 का. यहाँ पे मैं 500 नहीं करूंगा. अगर मैं 500 करता तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम पेइंग टैक्स ऑन टैक्स. जो मैन्युफैक्चरर ने 300 रुपए का टैक्स पेमेंट किया था उसका भी 5% मैंने यहाँ पे लिया है. दैट इज कॉल्ड एज ए कैस्केडिंग. तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हम लोगों ने वैट में और जीएसटी में रिमूव कर. तो यहाँ पे मेरा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट टूवर्ड्स होलसेलर इज 10,500. ये 10,500 वो होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर के पास जाके यहाँ पे उसको 10,500 को बेचे. देन सो रिटेलर क्या करेगा, 16,000 का ये जो प्रोडक्ट है उसका फिर 5% 800 रुपीज हो गया. 800 रुपीज में से 500 रुपए इट इज पेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट एट अर्लियर स्टेज, so that this retailer will get the input credit of 500 rupees. तो रिटेलर को कितना भरना है, नाउ हाउ मच अमाउंट रिटेलर हैज टू पे, ओनली 300 rupees. How much amount retailer has to pay, only 300 rupees, because 800 minus 500 which is paid at the earlier stage I will get input credit. And so total 6,000 plus 800 is equal to 16,800. अभी ये 16,800 में फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे एंड रिटेलर विल सेल दिस प्रोडक्ट. रिटेलर विल सेल दिस प्रोडक्ट टूवर्ड्स retailer will sell towards this product towards customer at 20,000 is the basic price, basic selling price, plus 5% of this 20,000 is equal to 1,000. So 20,000 plus 1,000 is equal to कितना हो गया 21,000. तो फाइनल कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट 21,000 को जाएगा और यहाँ पे रिटेलर क्या करेगा, उसका टैक्स लायबिलिटी 1,000 का है, उसको इनपुट क्रेडिट कितना मिल गया 800 का. तो एक्चुअल वो कितना पेमेंट कर रहा है यहाँ पे 200 रुपए. सो ड्यूरिंग दिस चेन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग दिस चेन हाउ मच टैक्स गवर्नमेंट हैज बीन कलेक्टेड, हाउ मच टैक्स गवर्नमेंट हैज बीन कलेक्टेड.
कितना टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है? 300 + 200 + 300 + 200 इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या होता था, लुक एट द सेकेंड थर्ड कॉलम, दैट इज द टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या होता था, मैन्युफैक्चरर 300 रुपए पेमेंट करता था, सप्लायर, उसके बाद मैन्युफैक्चरर यहाँ पे 500 रुपए करता था, होलसेलर 800 करता था और रिटेलर 1000 करता था। तो टोटल टैक्स एबिलिटी कितना हो गया देखो, 1600 रुपए टैक्स पेमेंट करता था। सो दिस इज कॉल्ड एज द टैक्स ऑन टैक्स, एंड ये हम लोगों ने वैट में और जीएसटी में रिमूव किया। ओके, so student, are you comfortable with cascading effect? Just tell me, do you understood this concept of cascading effect? Yes, sir. Okay, तो ये हम लोगों ने कैस्केडिंग इफेक्ट निकालने के लिए हम लोगों ने वैट लाया, और वैट में हम लोगों को क्या मिला, वी आर गोइंग टू एंजॉय द इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट मीन्स व्हाट, द टैक्स which is paid at earlier stage, we are not supposed to pay tax again. We will get its a credit. We will get that amount of excuses while paying the tax, because that amount of tax is already paid by my supplier, or that amount of tax is already paid at the earlier stage. That's why there is no need to pay tax again and again. Okay, so in this way we have removed this lacuna of direct taxation. So इसको बोलते हैं cascading effect. Okay, so can we stop here because it is almost 8 o'clock. So tomorrow also we have session at 7 p.m. Okay, so we will start tomorrow session on time. So to the next lecture we will touch to the GST. So whatever we are studying as of now, this was background of GST. Okay, so tomorrow we will start with GST. Okay, so should we stop here? Have any suggestions, have any queries, you can ask me right now, otherwise we will leave now. No query, sir. Thank you. You are understanding now? Yes, sir. Yes, sir. I will give you small task. So before tomorrow's session, what you have to do, you have to just visit GST Council website. GST का सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है ना, वो एक बार रेफर कीजिए, कुछ नहीं करना है, उसमें क्या डालना है, गूगल पे जीएसटी डाला, जीएसटी काउंसिल डाला या इनडायरेक्ट टैक्सेशन डाला तो गवर्नमेंट का वेबसाइट खुलेगा। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दैट वेबसाइट और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वही हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल में सीखना है। ठीक है, Okay, sir. तो जस्ट स्पेंड 5 to 10 minutes फॉर जीएसटी वेबसाइट। यू कैन जस्ट गूगल, you can just Google the GST website. You will get the GST website and you will try to understand. You will try to see so many things. Okay, and GST website, GST Council is the one of the platform online mode. It is the online mode. Offline कुछ नहीं रखा है GST में. Okay, तो कल थोड़ा सा उसका GST का वेबसाइट थोड़ा सर्च करो, तो ताकि हम आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा सा बहुत इजीली हो जाए. Okay, so let us stop here. Thank you so much. Thanks for your time. And sorry for today's inconvenience.